Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about bioprinting and regenerative medicine. So before proceeding towards the video, I just want to request that please do like, comment, share and subscribe to my channel. So let's get started. Let's understand what is bioprinting and how it is benefiting us in the longer run, and what is regenerative medicine, and how we can understand bioprinting and regenerative medicine in a detailed manner. Okay, so over the next 10 to 15 minutes, I'll explain what bioprinting is, how it works, the material and the technologies involved in bioprinting, current and emerging applications in regenerative medicine, and so on. Okay, so let's get started. Let's understand. So first and foremost is the introduction of bioprinting. We have to understand what is bioprinting, right? So see, in simple terms, if I put what is bioprinting, so bioprinting is the layer by layer deposition of the biological materials. So what do you understand, by the name of bioprinting? See, bio means it is composed of living cells or living component, right? That you understand, right? Printing means we are printing, we are creating something by just the deposition of layers onto layers onto layers onto layers, and that's how bioprinting helps us to create a certain product. What product, that we'll discuss, but what is bioprinting, you need to understand that first. So bioprinting is definitely the deposition of layers on layers on layers to create a product. So deposition of what? Deposition of, we are saying the deposition of layers, but deposition of what layers? What is there in the layers? Biological material. That's why the name is bioprinting. Okay, so biological printing, biological materials यानी कि living cells जो होते हैं, they are suspended in a बायोमटीरियल मैट्रिक्स. वो एक बायोमटीरियल मैट्रिक्स में सस्पेंडेड रहते हैं, जिसे हम बायो इंक बोलते हैं. वो बायोमटीरियल मैट्रिक्स जो होती है जिसके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं, वो हम मैट्रिक्स को बायो इंक बोलते हैं. ओके, so this is how bioprinting helps us to build tissue into structures. Okay, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स उससे बनाया जा सकता है बायोप्रिंटिंग से. तो बायोप्रिंटिंग इज अ वेरी emerging trend currently in the market, which helps us to create a tissue-like structure with just the living cells, suspended in a biological matrix, which is nothing but the bio ink. Okay, so think of it like 3D printing, but instead of metals or plastic, we are printing cell containing gels that can develop into functioning tissue. Think of it like that. For example, there is a we all have seen printing, right? So think of it as an example. It does not have a plastic in here because it's bioprinting. We have cells, living cells with us, which is suspended in the bio ink or biometrics, whatever you like to call it, which can develop into a functioning tissue. Okay, so that is how bioprinting can be explained in simple terms. It definitely integrates the biology, definitely integrates the engineering and material science as well. Okay, ये एक integration है 2 to 3 branches का. That's how we got to know about bioprinting. See, bioprinting is not just limited to science. It definitely is a part of engineering too, because we are printing a tissue-like structure, right? Literally, it is wow. So what does bioprinting do? It enables patient-specific tissue constructs. So one major advantage, there are many other advantages as well, but one major advantage of bioprinting is that it enables patient-specific tissue constructs. Patient-specific यानी कि personalized tissue construction किया जा सकता है, personalized tissue को बनाया जा सकता है with the help of bioprinting. Okay. So this field combines cell biology, material science, engineering. As I said, key elements क्या है इसके?
a source of viable cells चाहिए होते हैं, a printable biomaterial that supports cell survival and function, हमें एक मैट्रिक्स चाहिए होती है जिसमें वो सेल्स सस्पेंडेड रहेंगे और वो सपोर्ट कर सकते हैं सेल्स को ग्रोथ के लिए, और प्रिंटिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसके थ्रू हम प्रिंट करवाएंगे. ओके, तो ये तीन चीज़ों की मदद से you can print a tissue like structure. So the ultimate goal is to create tissue constructs for research, drug testing, and eventually organ replacement. Currently there are ongoing research studies for organ replacement part, but definitely drug testing and research is ongoing with these kind of materials. Okay, so it is a very powerful technique because it enables patient specific design, patient specific tissue constructs. So it is a very important and viable technique. Moving forward to principles of bioprinting. Now, what is the principle of bioprinting, or on what principle does bioprinting works? So, see, bioprinting rests on four core principles, if you like to understand it that way. चार मेन कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे बायोप्रिंटिंग फंक्शन करती है. व्हाट आर दे? फर्स्ट इज बायो इंक फॉर्मुलेशन. बायो इंक फॉर्मुलेशन क्या होता है? So see, bioinks are made up of cells plus a supportive vehicle, typically a hydrogel. जो बायो इंक होती है वो बायो इंक इज नथिंग बट सेल्स, उसमें एक उसके सपोर्टिव व्हीकल जैसा जो होता है जिसके अंदर वो सस्पेंडेड रहते हैं सेल्स. सो दैट सपोर्टिव व्हीकल इज नथिंग बट अ हाइड्रोजेल. ओके, सो बायो इंक मस्ट बी प्रिंटेबल, फ्लो अंडर शेयर. वो बायो इंक ऐसी होनी चाहिए जो प्रिंटेबल हो, प्रिंट कर सके हम उसको, एंड जेंटल होनी चाहिए कि वो सेल्स को अलाइव भी रखे. बायो प्रिंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो सेल्स को सपोर्ट करे ग्रो करने के लिए और प्रिंट करने के लिए भी इजी हो. इट शुड नॉट बी हार्ड, वरना प्रिंट नहीं हो सकता है, राइट? सो इट हैज टू हैव अ कॉम्पोजिशन जिसमें वो सपोर्ट भी कर पाए सेल्स को और प्रिंट भी हो सके. तो इस तरीके से बायो इंक का फॉर्मुलेशन होना चाहिए. बायो इंक में ECM प्रोटीन्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स, जो सेल को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए. ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो अगेन सेल को सपोर्ट करते हैं. क्रॉस लिंकेबल पॉलीमर्स होते हैं जो सेल्स को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने के लिए. दैट इज हाउ बायो इंक इज मेड. ओके, नेक्स्ट इज डिपोजिशन स्ट्रैटेजी. फर्स्ट इज फॉर्मुलेशन क्या होता है वो हमें समझ में आ गया. नेक्स्ट इज डिपोजिशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरीके से लेयर्स को डिपॉजिट किया जाता है कि वो एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाए. सो वो प्रिंटर जो होता है, दैट द प्रिंटर डिपोजिट्स द मटेरियल इन अ प्रोग्राम्ड मैनर और इन अ प्रोग्राम्ड पैटर्न. या तो वो ड्रॉपलेट्स की तरह उसको अरेंज करता है, या कंटिन्यूस फिलामेंट्स की तरह अरेंज करता है, या लाइट एक्टिवेटेड लेयर्स की तरह अरेंज करेगा. तो वो डिपोजिशन काफी एक तरीके के एक प्रोग्राम्ड मैनर में होता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस फिलामेंट्स, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वैसा. तो वो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टिश्यू आर यू फॉर्मिंग, किस ऑर्गेनिज्म के लिए बन रहा है, वो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. एंड ये देयर आर दीज टाइप्स जिसके जिनके फॉर्म में और बायो प्रिंटिंग हो सकती है. तो दैट इज हाउ लेयर बाय लेयर डिपॉजिट की जाती है. बट वो जो लेयर बाय लेयर होता है वो एक ही मेथड में होगा. आइदर इट विल बी फॉर्म्ड एज अ ड्रॉपलेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, आइदर इट विल form as a filament upon filament upon filament like structure. So it depends, but then formulation जो भी एक deposition strategy जो भी एक है वो एक particular tissue like structure के लिए same रहेगी. okay, चॉइस ऑफ मेथड रिजोल्यूशन अफेक्ट करता है, स्पीड अफेक्ट करता है, सेल वायबिलिटी भी अफेक्ट करता है. बिकॉज व्हाट मेथड आर वी चूजिंग, अगेन एज आई सेड it depends on so many factors, and those factors are going to impact the cell's viability in the longer run. okay, third is cross linking and stabilization. अब लेयर बाय लेयर डिपोजिशन हो गया, उसके बाद क्रॉस लिंकिंग आपस में होना जरूरी है मॉलिक्यूल्स की, एंड स्टेबलाइज वो स्ट्रक्चर का स्टेबलाइजेशन में आना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आफ्टर डिपोजिशन द प्रिंटेड मटेरियल इज फिक्स्ड यूजिंग आयनिक और थर्मल और एंजाइमेटिक फोटोकॉन्सिस प्रोटो क्रॉस लिंकिंग. So it keeps its shapes and supports cells mechanically.
बिकॉज सी हमने उसको बना दिया है उस स्ट्रक्चर को, बट वो फिक्स करेंगे नहीं, जब तक फिक्सेशन नहीं होगा तो इट विल लूज इट्स शेप, राइट। सो उसको फिक्स किया जाता है। फिक्स करने के लिए आयनिक, थर्मल, एंजाइमेटिक, ये सब क्रॉस लिंकिंग फैक्टर्स यूज किए जाते हैं ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, एक स्टेबल स्ट्रक्चर कैरी कर ले। Alginate, is one major example. Alginate is ionically cross-linked with calcium. While PEG based hydrogels जो होते हैं वो फोटो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, मतलब फोटो क्रॉस लिंक यानी कि लाइट की मदद से उनको क्रॉस लिंकिंग कराया जाता है। क्रॉस लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन दी जो हाइड्रोजेल मैट्रिक्स आपने लगाई है उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग होनी चाहिए, तभी जाकर वो स्टेबलाइज होगा स्ट्रक्चर। सो वन एग्जाम्पल इज ऑफ आल्जिनेट, जहाँ पर आल्जिनेट को क्रॉस लिंक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। पीईजी हाइड्रोजेल्स जो होते हैं वो फोटो क्रॉस लिंक किए जाते हैं। ओके उसके बाद लास्ट प्रिंसिपल इज पोस्ट प्रिंट मैचुरेशन। प्रिंटिंग हो गई, उसके बाद मैचुरेशन होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर एप्लीकेशन। सो प्रिंटेड कंस्ट्रक्ट्स को कल्चर किया जाता है बायोरिएक्टर्स में या इंक्यूबेटर्स में, जहां पर जो सेल्स हैं वो पूरी मैट्रिक्स को रीमॉडल करते हैं एंड सेल टू सेल कनेक्शंस बनाते हैं। आपस में जब सेल टू सेल कनेक्शन बनता है तब वो फंक्शन गेन कर पाते हैं और तब वो एक मैचुरेशन स्टेज पे आ पाते हैं। मैचुरेशन स्टेज कैन अगेन टेक फ्रॉम डेज टू मंथ्स, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इट इज, इन विच शेप इट इज, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स, बट पोस्ट प्रिंट मैचुरेशन इज वन थिंग एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो उसके लिए उसे कल्चर किया जाता है ताकि वो एक मेच्योर स्टेज पे आ पाए। So throughout the process, maintaining sterile conditions, proper nutrient supply, oxygenation, mechanical cues, these all factors are very important throughout the process. All factors needs to be in the optimum state, ताकि कोई भी चीज जो है वो कहीं पे भी differ ना करे. Otherwise, it can impact the process, it can impact the tissue-like structure, it can impact the cell viability. So that's how it works. Okay, moving forward to types of bioprinting techniques. Now what are the types of bioprinting techniques? I told you how what bioprinting is and what are the principles. Now bioprinting के कुछ types हैं, ठीक है? So there are major 4 types of bioprinting. There are many types, but majorly मैंने 4 types यहाँ पर include किए हैं. So first type I have mentioned is inkjet bioprinting. Inkjet bioprinting को हम drop on demand bioprinting भी बोलते हैं. So it works like desktop inkjet printers. जो desktop inkjet printers होते हैं ना, I think you must be aware of, you all are aware of inkjet printers. तो वो जो inkjet printers के जो desktops होते हैं उसके तरह वो कहीं ना कहीं काम करता है. It dispenses tiny droplets of bio ink. छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, इंकजेट बायोप्रिंटिंग इज ड्रॉपलेट बेस्ड, तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इंक के ड्रॉप करता है और इस तरीके से एक प्रॉपर जो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है वो बनता है. इसके फायदे ये हैं दैट इट इज फास्ट, बिकॉज ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर ही देना होता है, लेस एक्सपेंसिव है. इट इज गुड फॉर लो विस्कोसिटी इंक्स, जो बिल्कुल ऐसे इंक्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी कम होती है, ज्यादा विस्कोसिटी नहीं होती. विस्कोसिटी इज द टेंडेंसी टू फ्लो, एक लिक्विड की टेंडेंसी टू फ्लो क्या है, वो विस्कोसिटी होती है. तो जिसकी विस्कोसिटी कम होती है, जो थोड़े से थिक स्ट्रक्चर में होते हैं, उनके लिए इट इज दिस पैटर्न और दिस बायोप्रिंटिंग मेथड इज गुड. इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं दैट इट इज लिमिटेड टू थिन लो विस्कोसिटी बायोइंक्स. बहुत ज़्यादा हाई विस्कोसिटी बायोइंक्स के साथ आप इसको नहीं कर सकते इस मेथड को, बिकॉज इट कैन स्ट्रेस सेल्स फ्रॉम थर्मल और पीजो फोर्सेस. कोई भी फोर्स लगता है, अगर ड्रॉपलेट बेस्ड स्ट्रक्चर है तो वो फोर्स एक्सर्ट होगा एंड इट कैन डिस्टरप्ट द बायोप्रिंटेड टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर. ओके, moving forward to the next type is laser assisted bioprinting. laser assisted bioprinting क्या होता है? लेजर पल्सेस यूज की जाती हैं टू इजेक्ट सेल कंटेनिंग ड्रॉपलेट्स. जो सेल्स होते हैं कंटेनिंग द ड्रॉपलेट्स, वो सेल्स के अंदर ड्रॉपलेट्स होती हैं, लेजर की मदद से उसको एक्सर्ट किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है फ्रॉम अ डोनर स्लाइड ऑन टू अ रिसीविंग सबस्ट्रेट. डोनर स्लाइड से रिसीविंग सबस्ट्रेट
जो सबस्ट्रेट वाला जो बायोमेट्रिक्स होता है उसके अंदर लेजर के थ्रू वो इजेक्ट किया जाता है। इसका प्रोज ये है कि इट इज वेरी हाई रेजोल्यूशन टेक्निक, बिकॉज लेजर की मदद से हम कर रहे हैं तो हाई रेजोल्यूशन है, क्लॉगिंग नहीं होती है एंड जेंटल होती है सेल्स को, अगर हम उससे प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करें तो। लेकिन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव मेथड। एक्सपेंसिव बिकॉज लेजर यूज हो रहा है, एंड कॉम्प्लेक्स भी है बिकॉज डोनर से रिसीवर सबस्ट्रेट पे करना पड़ता है, एंड इट इज डन विथ द हेल्प ऑफ लेजर, सो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है। ओके, moving forward to next is extrusion bioprinting. Extrusion bioprinting is the most common and versatile method of bioprinting. यहाँ पे क्या होता है, एक सिरिंज या फिर पिस्टन कुछ भी लिया जाता है, वो सिरिंज की मदद से कंटिन्यूस फिलामेंट्स बायो इंक के ड्रॉप किए जाते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटिन्यूस फिलामेंट्स, तो वो दैट इज एक्सट्रूजन बायोप्रिंटिंग। सी इट हैंडल्स अ वाइड वेराइटी ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी बायोइंक्स, क्योंकि हाई विस्कोसिटी वाले मेथड को भी हम इससे कर सकते हैं, डेंसिटी हाई डेंसिटी वाले लिक्विड को भी हम इस मेथड से कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल स्काफोल्ड्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन इट हैज़ डिसएडवांटेजेस एज वेल। रिजोल्यूशन कम होता है दूसरे मेथड्स के कंपैरिजन में, शेयर स्ट्रेस कुछ सेल टाइप्स को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू स्टीरियोलिथोग्राफी। स्टीरियोलिथोग्राफी इज द लाइट बेस्ड मेथड, और बहुत ही हाई प्रिसीजन होता है उस मेथड का। It uses light to selectively polymerize a photosensitive bioink layer by layer. लाइट के मदद से वो प्रॉपरली लेयर बाय लेयर बायोइंक्स को अरेंज करती हैं। हाई रेजोल्यूशन मेथड है, एक्सीलेंट प्रिसीजन है, लेकिन अगेन it needs photopolymerizable links and possible phototoxicity issues. फोटो मतलब लाइट का यूज कर रहे हैं तो फोटोटॉक्सिसिटी यूज होना जायज है, एंड लाइट चाहिए होती है, दैट इज ऑल्सो वन डिसएडवांटेज कि हमेशा ये लाइट की मदद से ही हो सकता है, देयर इज नो अदर वे। ओके, सो दीज वर द टॉप मोस्ट important types of bioprinting techniques. There are other types as well, but I have included the major ones. Then moving forward to materials in bioprinting. What are the materials that are being used in the bioprinting? So see, bioinks are central to success. They must meet multiple demands. Because बायोप्रिंटिंग बायोइंक्स जब हम बायोप्रिंटिंग के अंदर जब हम बायोइंक्स यूज कर रहे हैं, दे हैव टू मीट मल्टीपल डिमांड्स, तब जाके वो प्रोसीजर प्रॉपरली किया जा सकता है। बी प्रिंटेबल, जो बायोइंक्स होती है वो प्रिंटेबल होनी चाहिए, एज आई सेड हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, उतना शेयर मेंटेन एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एंड फ्लो उसका उस हिसाब से होना चाहिए। सेल्स को सपोर्ट करने, सेल सर्वाइवल सपोर्ट करने के लिए मेंटेनेंस, लाइक इट शुड मेंटेन द सेल सर्वाइवल, प्रेजेंट बायोलॉजिकल क्यूज एंड हैव ट्यूनेबल मैकेनिकल एंड डिग्रेडेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो ट्यूनेबल होना चाहिए ताकि ऑप्टिमाइज की जा सके। कॉमन कैटेगरीज क्या क्या होती हैं? नेचुरल पॉलीमर्स, बायोइंक्स के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? फर्स्ट थिंग इज नेचुरल पॉलीमर्स, कोलाजन है, आल्जिनेट है, जेलेटिन है, इनको यूज करते हैं एज बायोमेट्रिक्स। बायोएक्टिव है बिकॉज बायोलॉजिकल कंपाउंड्स है, बायोएक्टिव हैं, सब सेल्स अटैचमेंट सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ा वीक होती हैं। दिस इज वन डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोलाइड है, पीईजी एंड पीसीएल है, पीएलजी भी होता है, सो इनका ट्यूनेबल मैकेनिकल एंड डिग्रेडेशन रेट होता है, लेकिन अगेन बायो एक्टिविटी कहीं ना कहीं नहीं होती है इनके अंदर, सो दिस इज द डिसएडवांटेज। बट ट्यूनेबल मैकेनिकल एंड मैकेनिकल एंड डिग्रेडेशन रेट्स होती हैं। हाइब्रिड हाइड्रोजेल्स भी यूज किए जाते हैं इम्प्रूव फंक्शनैलिटी के लिए। हाइब्रिड हाइड्रोजेल्स एज इन जहाँ पर
हाइब्रिड हाइड्रोजेल्स या कॉम्पोजिट इंक्स भी बोला जाता है उसको, जहाँ पर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपोनेंट को मिक्स करके कंबाइन करके बायो एक्टिविटी भी मिले ताकि, और प्रिंटेबिलिटी भी मिले प्रॉपरली, तो वो वैसे भी बनाया जाते हैं हाइब्रिड हाइड्रोजेल्स। एंड स्टेम सेल्स एंड प्राइमरी सेल्स इज बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। स्टेम सेल्स और प्राइमरी सेल्स हैं जिनको लिविंग सेल्स हमें यूज करने ही है टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, तो दैट इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, moving forward. Okay, applications in regenerative medicine. There are vast applications in regenerative medicine. Okay, so bioprinting is, already impacting multiple areas of regenerative medicine and biomedical research. What are they? See, tissue, they are being used in tissue engineering for implants. स्किन के लिए यूज हो रहा है, कार्टिलेज बनाने के लिए, बोन कंस्ट्रक्ट्स बनाने के लिए यूज हो रहा है। प्रिंटेड स्किन पैचेस आजकल मार्केट में आ गए हैं, तो इस प्रिंटेड स्किन पैचेस कैन एक्सेलरेट वुंड हीलिंग एंड दे आर आल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर burn patients right now. Okay, organ models and disease modeling, this is one very wide use of regenerative medicine. Bioprinted tissues are used to create realistic human tissue model for drug screening. Drug screen कर सकते हैं हम अगर humans are not available for the research purpose, right? So वो human like models हम बना सकते हैं, उसके ऊपर हम research कर सकते हैं if you want to understand your particular drug or a particular solution onto the, like how will it affect the human body, तो वो एक चीज possible है with this bioprinted tissues. Drug discovery and toxicology is one very major application of bioprinting टेक्नोलॉजी, क्योंकि हाई थ्रूपुट बायोप्रिंटेड टिश्यूज ड्रग एफिकेसी और सेफ्टी टेस्ट करने के लिए काम आ सकते हैं। वेस्कुलर ग्राफ्ट्स एंड स्मॉल डायमीटर ब्लड वेसल्स, रिसर्चर्स जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि ऐसे वेसल लाइक स्ट्रक्चर बना सकें वो ग्राफ्टिंग और लार्ज टिश्यू कंस्ट्रक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, मतलब बहुत माइन्यूट लेवल पे वो उसको रिसर्च कर सकें, ग्राफ्ट्स बना सके ताकि रिप्लेसमेंट, ऑर्गन रिप्लेसमेंट, ट्रांसप्लांटेशन में वो हेल्प करेगा। ऑर्गन रिप्लेसमेंट इज वन मेजर एप्लीकेशन, बट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट, वी आर नॉट देयर, बट डेफिनेटली द रिसर्चर्स आर गोइंग ऑन, एज आई सेड. So printing fully functionally solid organs like the heart or liver remains a long-term goal in this part, but the progress is definitely in the line, and I am sure in the upcoming years we are going to achieve that as well. Okay, so these are some of the applications in regenerative medicine. What are the challenges and limitations? Now, despite the excitement or the advantages, bioprinting has several disadvantages or challenges. I would not say disadvantages, but there are several challenges and limitations currently. First is vascularization and perfusion. Vascularization, जो printed tissues होते हैं उनका vascularization. Thick metabolically active tissues need blood vessels to supply oxygen and nutrients. So अभी उसको engineer करना कि वो बिल्कुल मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू बन जाए, मतलब उतने उसके पास वेन्स एंड एवरीथिंग वेसल्स हों कि वो प्रॉपर ब्लड को सप्लाई कर पाए, ट्रांसफर कर पाए, वो चीज़ नहीं पॉसिबल हुई है. एंड पॉसिबल, आई वुड नॉट से पॉसिबल, बट देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दैट आउटकम. सो स्ट्रेटजीज लाइक सेक्रीफिशियल लिंक्स, एंडोथीलियलाइजेशन, प्रीफॉर्म चैनल्स, ये सब एक्सप्लोर किए जा रहे हैं कि हम इस तरीके से बना सकें उसको कि वेसल्स, ब्लड वेसल्स भी बन पाए अंदर, ताकि वो पूरा नेटवर्क स्टडी कर सकें. Scaling from lab to organ size is one major challenge. लैब में बनाना और फिर वो प्रॉपर ऑर्गन साइज, ह्यूमन लाइक ऑर्गन बनाना, या फिर वो प्रॉपर एक मार्केट करना, आई मीन मार्केट एज एन उसको स्केल अप करना कि वो बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज हो पाए. दिस इज वन मेजर चैलेंज एज ऑफ नाउ, बट in the time to come we are going to cover that as well, I am hoping. मैकेनिकल एंड फंक्शनल मैच्योरेशन, जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स में लास्ट बताया कि मैच्योरेशन होना बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स बिकॉज द बायोइंक्स लैक्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ फुली मैच्योर सेल फिनोटाइप्स, उसकी वजह से वो मैच्योरेशन नहीं हो पाता है. सो दैट इज वन चैलेंज. सेल सोर्सिंग एंड इम्यून कंपैटिबिलिटी,
ऑब्टेनमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑटोलोगस सेल्स, वो एक मेजर चैलेंज है, बिकॉज सेल्स इज इम्पॉर्टेंट इन दिस, ठीक है। वो तो ऑटोलोगस सेल्स का मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेगुलेटरी, एथिकल एंड कॉस्ट इशूज तो आर डेफिनेटली देयर। रेगुलेटरी सिनेरियो इज वेरी stringent as of now because it is a very trending part, but cost highly expensive. It is a highly expensive technique, so high cost and technical barriers are definitely there. Okay, so what are the future trends in the market, and what are the strategies we are incorporating to overcome the challenges? So future trends are 4D bioprinting is one, 3D bioprinting से भी ऊपर 4D bioprinting जिसमें सेल्फ असेंबलिंग एंड अडेप्टिव टिश्यूज बन जाएंगे, वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो वो है ऑर्गन ऑन चिप्स, चिप पे छोटा सा जो चिप होता है उस चिप पे पूरा प्रॉपर ऑर्गन बन पाएगा, ड्रग डिस्कवरी जिसके लिए वो काम आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन, डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है, and like it is being used currently as well. Nanomaterial in bioinks with enhanced function, nanomaterial use किए जा सकते हैं in bioinks में छोटे छोटे nano particles use करे जा सकते हैं to improve the function and scalability, to improve the function and printability of the bioinks. And we are moving towards fully functional organ transplantation. We are like trying to develop bioprinted tissue in such a way that we can do the organ transplantation, the fully functional organ transplantation. Okay, ethical and regulatory aspects. There are concerns about human organ printing. Human organ printing hai because see many people have this thought right now that ह्यूमन ऑर्गन को प्रिंट कर रहे हैं, बट इट इज गोइंग टू लैक ऑल द कॉम्प्लेक्स, सी बिकॉज आवर बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स बॉडी, राइट? सो टू प्रिंट the exact same replica of our body is somewhere difficult, right? Some people are having these concerns that organ transplant karenge, so the body might throw a immune response to it. So वो सब चीजें कहीं ना कहीं concerns में है अभी, but as the researches grows, as we get more research, more positive outcomes of bioprinting, I think these ethical concerns are going to be solved. Ownership and intellectual property. Ownership or intellectual property is one. long term safety है कि नहीं, as I said efficacy studies चल रही हैं. Global regulatory frameworks evolving. Global regulatory scenario is, as I said, is not very favorable currently, but it is evolving. So in the time to come, it can be favorable. Okay, so all a quick recap. Bioprinting holds transformative potential in medicine. बहुत ज़्यादा transformative potential है. Still at experimental and early clinical stages. अभी we are still in the clinical stage research part. Future promises patient specific organ transplant, but future may in the upcoming years it will take a long leap of years, but in the upcoming years patient specific organ transplant possible हो पाएगा with the help of bioprinting. And it is a collaboration between science, ethics and policy, right? It is a collaboration between all these branches, and it is important as well कि सब में collaboration होगा तभी ये चीज successful हो पाएगी. Okay, so that was about it. I hope you enjoyed the video. I hope you grasped all the important points from the video. If you have any doubts, please do ask in the comment section below. I will definitely I'll definitely answer each and every one of you. And if you want any particular choice of your topic to be explained by me, please do let me know below in the comment section. I'll video on whatever topic suggested by you guys. Thank you so much for watching. Please do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye. Take care.